नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम हैं एक्सपो मास्टर 21 एग्जीबिशन के स्टॉल में, जहां पे सुधानवा आयुर्वेदा ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड की पूरी टीम, एक यंग टीम, एक एनर्जेटिक टीम हम लोगों के साथ में है। जहां पे आप लोग प्रोडक्ट्स देखेंगे, इनके पास में येलो कॉर्न, राइस, शुगर, सोयाबीन, एडिबल ऑयल्स, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप अपनी कंपनी के लिए और आपके प्रोडक्ट का जो एक्सप्लेनेशन है, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आप दीजिए। Sir, we have a premium quality product over here. Currently, we are supplying rice, maize, and sugar, Eclipsa 45, and also we have vegetable oils and vegetable oils over there. Currently, we are supplying sunflower oil and soyabean oil. So, first of all things, we have connected with around 400 to 500 refineries over there, and nicely we are connecting with South African refineries and Brazil refineries, and we are also supplying to Bangladesh governments. And currently we have a large and premium quality over there of rice, Eclipsa 45. And if you have any requirement over there, then we can definitely supply. And if you have query, then we can note down. First of all things, our product are based on SGS report, which is a third party inspection. So you have a good surety of your product that we are explain and all the things which is suitable to our products. You can ask anything, any questions to us. So actually in India we know the process and the system, but if someone want to purchase from the outside India, like from the Brazil as you said, so what is the process system? If someone want to connect with you, how they can deal with you in this all kind of process? So first of all things, we have a easy procedure over there. Currently we have a buyer and our procedure is like that. First buyer send us a ICPO. After that we will send them a offer, and we will sign an agreement. If there is any changes needed in the agreement, then we can definitely change the agreement as per suitable and buyer. First of all things, we are supplying as a buyer specification. Absolutely. We are supplying as a buyer specification. If buyers need any type of changes in the specification, we can easily supply them. And after that, if the buyer need a surety that we can work or not, then we can also supply them a BL copy, which is our previous BL copy, that we have a good experience in this supply. And also we can submit SGS report that they can inspect our quality and our product easily. As we know right now, before some time sugar export was banned. Yeah. But now government uplifted and released the quota. So right now sugar जो भी export होती है उसके लिए export का authorization लगता है. So is your company is like a authorized company for the sugar export? Sir, we have a quota of exporting sugar, and our company is authorized company to supplying sugar anywhere. And first of all things, we have a government certificate over there, so we can easily supply sugar to anyone. Okay. And again the like soyabean, उसका एक कॉन्सेप्चुअल थिंग बड़ा अलग होता है। हम जब कंटेंट की बात करते हैं तो आपके पास में जो सोयाबीन है उसका ओरिजिन क्या है और आप उसमें किस तरीके से सपोर्ट एंड सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं? Sir, currently we have origin of Brazil origin soybean, non-GMO soybean, GMO soybean. We have all type of which is suitable to buyer. They can purchase from us. All type of specification is available, which is 100% verified and SGS inspected. SGS is the #1 company for inspection, so buyer can easily trust on us. So, in short, if someone wants to start export in these products, so can you cater from the scratch to end each and everything like the supporting part for the export system? Yeah. So if any new company or any new person want to join us, then they can definitely join us. We take care all of the things about product, photo the dispatch and CIF country. We can easily taking care of all the things. If anyone join a new and they doesn't start a company, then we can also sign the NCNDA and IMFPA agreement over there, so they can easily trust on us and they are in safe hand. So दोस्तों, जो लोग भी शुगर में खास करके शुगर, सोयाबीन, येलो मिर्च यानी कॉर्न, मक्या और राइस के अंदर काम करना चाहते हैं, वो इस गुजरात की यंग एंटरप्रेन्योर टीम से मिल सकते हैं। और जैसा उन्होंने कहा कि इनके पास में इंडिया के बाहर
ब्राजील जैसी कंट्रीज से भी सोर्सेज अवेलेबल हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स आपको इंडिया में नहीं मिलते हैं, और जब आउटसाइड इंडिया की बात आती है तो वहां पे कंप्लायंसेस एंड डॉक्यूमेंट्स चेंज हो जाते हैं, एक पूरा प्रोसेस सिस्टम चेंज हो जाता है। लेकिन जैसा ये टीम कह रही है कि वो लोग आपकी ब्राजील से भी अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, वहां से भी इनका पूरा सेटअप, पूरा सिस्टम जो है इन्होंने डेवलप कर रखा है, और ये वहां से भी आपको एक्सपोर्ट कराने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आज जैसा मैंने वादा किया था सभी लोगों से, ये ऑलरेडी बहुत अच्छा एक्सपोर्ट सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है, ऑलरेडी उन्होंने एक बहुत अच्छा, आप बोल सकते हो कि बिजनेस सिस्टम डेवलप किया है। बट इन्होंने एक्सपो मास्टर 21 के एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट किया है। So we are releasing, we are providing this verified exporter certificate on behalf of Expo Master 21. So congratulations, Sudan Ayurveda team, complete team. I wish for your. So आप जुड़ते रहिए सुदान आयुर्वेदा के साथ में। पूरा जो इनका एड्रेस, पूरा इनके साथ की जो कॉन्टेक्ट डिटेल, सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एक लास्ट लाइन, जो स्टार्टअप, जो मर्चेंट, जो एक्सपोर्टर आपके साथ में जुड़ना चाहें उनके लिए, आप कभी भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। लिंक और सब डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हमारी वेबसाइट, आप कांटेक्ट भी वहां से ले सकते हैं। आपको अगर कोई भी क्वेरी है, आप हमसे लेते हैं या नहीं लेते वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, पर आपको कोई भी क्वेरी है हम इजीली क्लियर कर सकते हैं उसको। एक अच्छा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट की जान होता है, लेकिन उस प्रोडक्ट के साथ में एक अच्छा एक्सपोर्टर, एक बिजनेस सपोर्टर आपके प्रोडक्ट को, आपके बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जा सकता है। और सुदान आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड की जो टीम है, ये एक इसी तरीके का सपोर्ट एनवायरनमेंट आपके लिए तैयार कर रही है। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अपने प्रयास पे ध्यान दीजिए, अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, अपने प्रोसेस सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप देश को आगे बढ़ाएंगे, देश आपको आगे बढ़ाएगा, और वापस हम एक बार फिर से भारत भाग्य विधाता बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।